वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी मैप एंड आईओ एक्सेसिंग का टॉपिक डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, लॉजिक डिवाइसेस एंड इट्स इंटरफेसिंग। So first we start with the microcomputer system. So in that the CPU or the microprocessor is connected to the input output device and the memory using the address bus, data bus and control bus. तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि माइक्रोप्रोसेसर में 3 टाइप के बस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एड्रेस बस दैट contains the address of memory or input output device. Second one is the data bus on which there is a data from the memory or from the input output device, and third one is the control bus that will generate the control signals, and that can be a transfer through this control bus to the various points in the microprocessor system. ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का CPU के साथ and with the memory also. ठीक है, then we'll see the block diagram. So here 3 type of buses are connected to the CPU of a microcomputer system. First one is the address bus, second data bus, and the third one is the control bus is there. So here this is the input output devices ports and this is the memory. So this address bus is a unidirectional, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था. डेटा बस इज द बायडायरेक्शनल, दैट्स वाई बोथ साइड आर एरोज. सो in this figure the address bus is a unidirectional bus that is indicated by the arrow. ठीक है, तो जैसे एड्रेस बस unidirectional है means CPU will generate the memory address and it is given to the input output ports. So that's why it is a unidirectional. The address bus is also used to send the input output port address on the address bus because यहाँ पे एक से ज़्यादा input output devices connect हो सकते हैं CPU के साथ. So that's why each device has its own address. So that address can be sent through this address bus. So when the CPU reads the data from the or the writes the data to a ports, then it sends the port address आउट टू द एड्रेस बस. ठीक है, तो जब भी CPU डेटा रीड करेगा या राइट करेगा फ्रॉम दिस डेटा पोर्ट, देन एट दैट टाइम देन इट सेंड्स द पोर्ट एड्रेस थ्रू द दिस एड्रेस बस. सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एड्रेस बस. सेकेंड टाइप ऑफ डेटा बस इज बायडायरेक्शनल. सो डेटा बस यहाँ पे बायडायरेक्शनल है, means it is towards the CPU and towards the this input output ports. That means that data can be transferred from CPU to a memory and vice versa. ठीक है, तो इसका मीनिंग ये कि डेटा जो है वो CPU से ट्रांसफ़र हो सकता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को या मेमोरी को, एंड डेटा कैन बी ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम दिस मेमोरी टू द CPU. So the control bus is the third type of bus that is used for sending the control signals to the memory and input output devices. तो कंट्रोल बस यहाँ पे दोनों को कनेक्ट होगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एज वेल एज दिस मेमोरी, टू सेंड आउट द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द वेरियस ऑपरेशन लाइक रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइस और रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम दिस मेमोरी. So that is the main function of this control bus. So this is the concept of microcomputer based system and its interfacing along with the input output devices. Then next topic of syllabus is the application of microprocessor and the microprocessor based system. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ मेन जो एप्लीकेशन है माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के वो स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर यूज इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन, कैलकुलेटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, कमर्शियल अप्लायंसेस, वीडियो गेम्स एंड टॉयज़. तो माइक्रोप्रोसेसर का जो यूज़ है वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन में यूज़ होता है. ठीक है, देन कैलकुलेटर में माइक्रोप्रोसेसर का यूज़ होता है फॉर द अरिथमेटिक कैलकुलेशन
or the scientific calculation. Then instrumentation or in commercial appliances microprocessor use. It is also used in video games and children toys. So that is the main application area of the this microprocessor. Second one, it is used in laboratory for training the student. ठीक है, तो laboratory में student को train करने के लिए और for the practical purpose these microprocessor systems are used. It is used as a CPU of a computer, so that is the main application. It also used to control input, output and other devices of a computer. ठीक है, तो CPU में भी microprocessor होता है, that is CPU is the central processing unit of a computer. So also it can be used as a control input and to generate the control output and connect with the other devices of a computer. Next application is they are used for word processing, database management, storing the information which is scientific and engineering calculations, fuel control of the furnace in power plant. ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हम कंप्यूटर में ऑफिस यूज़ होते हैं. ओके, ऑफिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन. सो फॉर वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ अ डेटा दिस माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम आर यूज. Also used for database management system like in SQL. It is also used to store the scientific information in the memory or in the cloud, or engineering calculation which are the complicated or scientific calculations are there. For that purpose microprocessor based systems are used. Also used in industrial application like furnace in the power plant. So the controlling the furnace in the power plant, the microprocessor based system are used. Another use is they are used in smart terminal, hobby movements, office automation, DAS and associated fabricated interfaces. Next is the controller for application like video games and automobiles. तो automobiles में कार एंड बाइक्स में भी माइक्रोप्रोसेसर चिप्स का यूज़ होता है. ठीक है, also in video games. Next application is they are used in computer for railway ticket reservation, air ticket reservations, then books, journal publishing, smart camera, energy meters, photograph processing and the general administration. So the use of microprocessor system is very vast. So they are also used in the railway ticket reservation. The computers are used and that computer's CPU contains the microprocessor. Also in air ticket reservation these microprocessors are used. Also in smart cameras microprocessor chips are used. In advanced energy meter of electricity these microprocessor based chips are used. Also in photography processing it can be used. Next use is they are used to measure and control the temperature of furnace and over the speed of electric motor, pressure of a boiler, control the level of liquid in the tank. So that is the commercial use in the industry. So in that microprocessor systems are used for measurement and control of temperature of a furnace which are used in the power plant and the various sector. Also by using this microprocessor system we can change the or control the speed of motor. We also change the rotations like clockwise rotation of motor or anti-clockwise rotation of the motors. Also in case of boiler the pressure can be controlled by using the microprocessor based system. Also the level of liquids in the tanks is also measured and controlled with the help of this microprocessor based system. So these are the different applications of microprocessor based system which are used in different areas like industrial, commercial purpose, then consumer electronics. So the use of this microprocessor based system is very vast. Then we start with the part C of unit 1, that is the introduction to the 8085. So 8085 is the microprocessor. This 8085 is the IC number of microprocessor, so which is a basic
microprocessor, that is 8085. So first topic of syllabus is the introduction. First we start with the इंट्रोडक्शन ऑफ 8085. ठीक है, तो 8085 का हमें डिटेल स्टडी करना है अभी इस सब्जेक्ट में, जो कि माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है. ठीक है, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया ए पार्ट में 8085 का. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ 8085. ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसका हमें इसमें डिटेल स्टडी करना है. So here features of this 8085 microprocessor can be divided into the three categories or the three groups. So the three groups are basic feature, then special features and miscellaneous features. ठीक है, तो इन तीन कैटेगरीज में फीचर्स को डिवाइड किया गया है माइक्रो प्रोसेसर के. ठीक है, सो we'll start with the first, that is basic feature of 8085. So in that there are again subcategories are there for the features. So first one is the processor size, second is the address bus size for the memory, third one speed of processor, and the fourth one feature is the address bus size for IO, that is input output devices. So the first one is the processor size. ठीक है, तो प्रोसेसर साइज जो है वो रिलेटेड है कि कितने बिट का डेटा प्रोसेसर एट ए टाइम यहाँ पे प्रोसेस कर सकता है. तो 8085 जो है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है. ठीक है, मीन्स एट ए टाइम वो 8 बिट यहाँ पे प्रोसेस कर सकता है. मीन्स जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर है, सो मैक्सिमम इट कैन सपोर्ट द 8 बिट डेटा एट ए टाइम. सो दैट्स व्हाई इट इज़ 8 बिट प्रोसेसर. तो 8085 को 8 बिट प्रोसेसर भी यहाँ पे कहा जाता है. सो इट मीन्स दैट इट हैज़ द 8 बिट ALU दैट कैन परफॉर्म द 8 बिट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली. उसमें जो ALU यूज़ हुआ है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, दैट इज़ अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट विच विल process the arithmetic as well as logical operation in the microprocessor. So this ALU is the simply a 8 bit, so that's why it can perform the 8 bit operation like arithmetical and logical. Second point is it has a 8 bit internal data bus and a register. So this 8085 microprocessor is the has a 8 bit data bus. तो जो data bus हमने study किया last lecture में, so that the size of that data bus is the 8 bit, and also the register which are temporary registers, so the size of each register will be a 8 bit. Third point is it has the 8 bit external data bus. So in short 8085 is the 8 bit microprocessor. Second point will be the it has the 3 version based on the frequency of operation. So जो clock speed required रहेगा for the working of 8085, so there are 3 versions available according to this clock speed. So first one is the 3 megahertz clock, second is the 5 megahertz clock, and third one is the 6 megahertz clock. So these are the 3 versions of this microprocessor based on the frequency of operation. Third feature is the 8085 has a 16 bit address bus to access the memory. So it can access there is a formula 2 raised to n, so it is 2 raised to 16, means it is 2 raised to 6 into 2 raised to 10, so 10 plus 6 is 16 totally. So it will be a 64 into 1k means 1000, so 64 kilobytes means 64,000 memory locations can be accessed by using this 16 bit address bus. ठीक है, तो 8085 में जैसे हमने देखा कि डेटा बस जो है वो 8 बिट है. ठीक है, तो सेकंड जो है बस है वो है एड्रेस बस. सो एड्रेस बस ऑफ 8085 इज अ 16 बिट. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है. डेटा बस इज अ 8 बिट एंड द एड्रेस बस ऑफ द दिस 8085 इज अ 16 bit, so that it can access the memory location is near about 65,535. That is the total figure. That much of memory location can be accessed by this 8085 microprocessor. Fourth feature is it has a 8 bit address bus to access the input output location.
तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होंगे to this microprocessor, so the address bus is a access the input output location up to the 8 bit. So 2 raised to 8, again same formula is used, 2 raised to n, so it will be a 256 input output locations can be accessed. Next, second category is the special features of 8085. So in that, first feature is single plus 5 volt power supply is required. So for the operation of the microprocessor, which is 8085, so the power supply needed is the plus 5 volt DC, that is direct current DC power supply is used. Second, on chip clock generator, जो हमने यहाँ पे frequency study किया अभी, ठीक है, so that can be generated on chip, that is inbuilt in this microprocessor. Third one, full duplex serial port, means the communication will be a full duplex mode, means sender and receiver both can send and receive the data at a time. Then we'll study it in detail. So the first feature is 8085 was the first microprocessor that required only a plus 5 volt DC power supply. Second one is the 8085 is the full duplex serial port with the 2 pins to receive and transmit the serial data. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में सेंडर एंड रिसीवर बोथ कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली. So 8085 has the 2 pins to transmit and receive the data. Third feature is it has the on-chip clock generator. Hence there is no need for external clock generator. Instead only a crystal is there which is connected in the 8085. ठीक है, so 8085 is the inbuilt on-chip clock generator, which is a crystal oscillator is used in that. So that is also one of the feature of this 8085. Third category of feature is the miscellaneous features of 8085. In that there are 4 features. First one is the interrupts provided by 8085. Second one is the instruction set. Third one is the register, and the fourth one is the data types which is used for arithmetical and logical units. So first we start with the interrupts. So 8085 has the 5 hardware interrupts and 8 software interrupts. Okay, so this 8085 is the total 13 interrupts are there, which are divided into the 5 hardware interrupts and the 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जिसका हमें 4th यूनिट में डिटेल स्टडी करना है इंटरप्ट का. सो द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर वेक्टर्ड. ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर एंड नॉन वेक्टर का डेफिनेशन देखा, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है, ओके, सो दे आर वेक्टर इंटरप्ट, एंड आउट ऑफ द 5 हार्डवेयर इंटरप्ट 4 आर वेक्टर इंटरप्ट वाइल 1 इज़ द नॉन वेक्टर इंटरप्ट. तो जो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स है उसमें से जो 4 इंटरप्ट्स है दैट इज ऑल्सो कैटेगराइज एज अ वेक्टर इंटरप्ट and 1 is non-vector interrupt. So here a table is given in which different interrupts which are hardware and software are given here of 8085. So here hardware interrupts are given. First is the trap interrupt, second RST 7.5, third RST 6.5, fourth RST 5.5, and the last one is the INTR. So first 4 interrupts are the vector interrupt. जैसे हमने स्टडी किया कि out of 5 hardware interrupts, so 4 are the vector interrupt and 1 is the non-vector interrupt. So this trap to RST 5.5, these are the vector interrupt, and the last one, that is INTR, so that is a non-vector interrupt. So these are the 5 hardware interrupts in the 8085. Second feature is 8085 has the following register. So there are different registers in the 8085 for temporary storage of data which are inbuilt in the microprocessor chip. So the first one is the accumulator register. So accumulator is the one of the register. The size of accumulator is the again 8 bit, so it can store the 8 bit data. Second, 6 8 bit general purpose registers which are named as a BCDEHL. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हमें ये रजिस्टर यूज़ करने पड़ेंगे माइक्रोप्रोसेसर के. तो जो एक सिंगल रजिस्टर है इट हैज़ अ 8 बिट रजिस्टर, मीन्स इट कैन सेव द 8 बिट डेटा. ठीक है, अगर हमें 16 बिट डेटा अगर यूज़ करना है
तो हमें यहाँ पे रजिस्टर का पेयर लेना पड़ेगा। जैसे डी, सो डी में 8 बिट से होंगे, ई में 8, सो 8 + 8 आर 16, डी एच एल लाइक दैट, ठीक है। या इंडिविजुअल रजिस्टर का भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 6 रजिस्टर्स आर देयर which are the 8 bit, so that are categorized as a general purpose register. Third is the flag register. So flag is enable and disable. It shows the or indicates the status. 16 bit program counter which is in short known as a PC, ठीक है। तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एंड 16 बिट इज़ अ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर दैट इज़ SP, ठीक है। तो इस तरह से जो 8085 के रजिस्टर्स है वो डिवाइड किए गए 8 एंड 16 बिट में। Next feature is 8085 has a powerful instruction set that can be do the various arithmetic operation like addition, subtraction, okay, and also increment and decrement of 8 bit as well as 16 bit. Also it can perform the logical operations like ANDing, ORing, XOR and NOT, okay. So the 8085 is a powerful instruction set. It has performed the arithmetic operation as well as लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो इनका हमें प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स लेना है, ठीक है, थर्ड यूनिट में। देन नेक्स्ट फीचर इज 8085 कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन 1 बीट, बाइट एंड सम वर्ड डेटा, सो इट कैन वर्क विद बाइनरी एज वेल एज डेसिमल डेटा, ठीक है। तो 8085 जो है वो वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। बीट मीन्स अ सिंगल बीट, ओके, और इट कैन बी अ बाइट मीन्स अ 8 bit. So already we studied the 8085 is the 8 bit microprocessor, so it can process the 1 bit 8 byte, okay, 8 bits means byte, or some word means a 16 bit, 16 bits means a one word. So it can process the this type of size of data, so it can work with the binary as well as decimal data. तो दोनों भी नंबर सिस्टम के लिए ये वर्क करेगा, बाइनरी एज वेल एज डेसिमल नंबर सिस्टम। So these are the various features of this 8085। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।